जी, हाउस इज इन ऑर्डर। कादिर पटेल साहब का माइक खोलें। सर, अब देखिए, मैं इसी रवैये की बात कर रहा था कि ये सियासत समझ से बालातर है कि आप झूठ बोलें, धड़ल्ले से झूठ बोलें, दरोगोई करें, हकायक को मस्क करें, और जब आपके सामने कोई आईना दिखाने आए तो कभी कोरम के बहाने भागें, तो कभी फोरम के बहाने भागें, तो कभी किसी और बहाने से भागें। भागने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने भी कोरम पूरा करके इनको गिरबान से पकड़ के यहाँ बिठाया है कि बात सुनो, बात किए तो जवाब भी लेते जाओ। तो जनाब, हम ये बात कर रहे थे कि आखिर इस सियासत का मकसद और महवर क्या है कि ना हुकूमत बनानी है, ना किसी को बनाने देनी है, ना चलानी है, ना चलने देना है। इनफैक्ट ये वो 4 साल हैं जिसमें पाकिस्तान माशी दिवालिया हुआ। खुद इनके वजीर खजाना कहते हैं कि 100% कर्ज बढ़ा। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं जाऊं तो 50 लाख करोड़ नौकरियों से लेकर जर्मनी, जापान सारा बयान कर सकता हूं। मैं सारी वो दीवानियात बयान कर सकता हूं जो इस मुल्क के साथ मजाक हुआ। लेकिन मैं प्रिसाइज होऊंगा, मैं कहूंगा कि सर, जो गलत हुआ वो कल भी गलत था, जो आज गलत अगर हो रहा है तो वो आज भी गलत है। आज साबिक स्पीकर साहब बड़ी तनकीद कर रहे थे, हालांकि वो आखिरी तक भी ये समझ रहे थे कि हकायक पर और अच्छी दलीलों पर मौलाना साहब राजी नहीं होंगे और उनका ये प्लान कामयाब होगा कि आईन में पार्लियामेंट की सुपरमेसी ना आ सके, और ये इस प्लान में शायद कामयाब होंगे। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मौलाना फजल-उर-रहमान साहब को, उनके साथियों को, जो अकली दलाइल पर कायल हुए और उनका प्लान नाकाम हो गया। तो सारी जलन उस चीज की है। अब सर आते हैं चादर और चार दीवारी। मैं कहता हूं कि ये शिकायत जरूर करें, लेकिन पहले हमेशा ये बात करें कि जी हमारे दौर में ये गलत हुआ था, आज इस दौर में ये गलत हो रहा है। ये अपने दौर की किसी बात को कंडेम नहीं करते। अगर चादर और चार दीवारी की बात थी तो आप बताओ कि यहाँ हमारी एमएलए खवातीन डॉक्टर सोबिया समेत, शाहिदा रहमानी समेत, सिर्फ नेब की एक पेशी पे अपने प्रेसिडेंट को मिलने गई। 11 खवातीन को आपने सड़कों पे घसीटा, लॉकअप में। वो 11 खवातीन आपका क्या कर लेती? एमएनएस पार्लियामेंटेरियन। हमने इस हाउस में एहतजाज किया। यही स्पीकर जिसको बहुत शर्म आ रही थी, अभी आपकी कुर्सी पर बैठा था, उस वक्त इसको शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, एक थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? आपको उस वक्त चादर चार दीवारी का तस्वर नहीं था। जब ईद की रात को मेरी बहन को आपने जेल से उठाकर रात को 12 बजे अडियाला जेल में भेजा, चादर और चार दीवारी आपको याद नहीं आई? आप बोलें कि हमने वो गलत किया था, आज ये गलत हो रहा है। अब ये कहते हैं कि जनाब ये कोई और लोग करवा रहे हैं। ये और लोगों का कॉन्सेप्ट लाया कौन है मेरे भाई? आपकी हाजिरियां पूरी कौन कराता था? आपके बजट पास कौन करवाता था? एक मेंबर से लोकेशन कौन मांगता था कि हाउस में पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो? बोलो वो गलत था, बोलो वो गलत था, आज भी गलत है। अपनी गलती पहले मानो। कौन कहता था कि मार दूंगा, तोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा? आज जब वो कहता था कि ये कर दूंगा, किसी और ने कर दिया है, तो फिर रोना किस चीज का? जिन्नात के घर में पत्थर मत फेंको मेरे भाई, जिन्नात के घर में पत्थर मत फेंको, बदरूहें निकलेगी तो भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। अब कहते हैं कि 5 मेंबर हमारे वो खरीद दिए गए और उनकी वफादारियां तब्दील की गई, और जब 15 मेंबर सेनेट के सादिक संजरानी को वोट देकर चले गए तो उनके तो जमीर का फैसला था। अब इनको देखो, अब ये बात बनती है। उस वक्त ये कह रहे थे कि इन 15 सेनेटर्स का जमीर जाग गया है, और आज जिसका किसी का निशान हुक्का, किसी का निशान कुर्सी, जो आजाद उम्मीदवार थे, अगर उन्होंने वोट दिया, कहते हैं ये लोटे हैं। और वो 15 सेनेटर, 15 जो संजरानी को वोट दे गए,
गिलानी साहब को वहां से हरवाया गया, वो इनके जमीर की आवाज थी। पहले कहो कि वो भी गलत था, ये भी गलत है। अगर वो गलत नहीं था तो खुदा की कसम ये भी गलत नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। पहले अपनी गलतियां मानो। आप कहते हो कि जनाब ये जमहूरियत पे हमला हुआ। आप नहीं देखते कंसेंसस कितनी दिन चला? आप नहीं देखते कि हमने हर जमात से बात की, मेरे चेयरमैन ने दिन रात बात की, आपसे भी बात की, मेहनत की। उसके बाद एक पार्लियामेंट को सुपरमेसी मिली जिसका आप भी हिस्सा हो। और साबिक स्पीकर साहब को आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा कि इसी चेयर पर जब एक दिन में 52 बिल पास हो रहे थे, या जब मेरी अपनी अमेंडमेंट्स को रौंदा जाता था, मैंने इस सीट पर, और मैं मुश्ताक साहब बैठे हुए गवाह हैं, मैंने जाकर उनको इस सीट पे कहा था कि तारीख इस फैसलों पे आपके गले पड़ेगी। आपको वो वक्त भुगतना पड़ेगा कि जब आपको भागने और छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप 5 की बात करते हो, आप 5 की बात करते हो। अरे आपके तो 50 लोग वोट देने पे राजी थे, बचा ही नहीं था कुछ पल्ले आपके। आप में तो दरारें इतनी हैं, और जो आप उछल उछल कर शोर करते हैं, जो 2-4 लोग, कभी पार्टी उनको नहीं मानती तो कभी पार्टी को वो नहीं मानता, कभी पार्टी कहती है कि मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं, कभी कहते हैं कि हमारा से। इनके अंदर तो दरारें इतनी हैं कि इतनी दरारें हैं कि 50 लोग और भी हम चाहते तो वो वोट देने को तैयार थे। लेकिन जिस तरह एक कानूनी नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमने जिस तरह एक आरटीएस प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया था, ये तरमीम भी हमने उसी तरह की। इमोरल, व्हाट इज मोरलिटी, व्हाट इज मोरल? आप जानते क्या है मोरल के बारे में? मोरल है क्या? मोरल ये है कि स्टेज पे खड़े होकर नकलें उतारना, दैट वाज मोरल। आप सारी रात डांस करवाना और तस्बीह हाथ में, ये मोरल है। और अगर आपको कोई कहे कि आपने यू टर्न ले लिया, तो क्या यू टर्न लेना सियासत में जरूरी है? झूठ बोलना तो जरूरी है। ये मोरल है, ये मोरल है। मैं किस बात की बात करूं? मैं अगर शुरू हुआ तो सारी रात कम पड़ जाएगी आपकी मॉरलिटी पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज अभी कहते हैं कि ये गैर जमहूरी हुकूमत है, और बाद में क्या कहा आखिरी में? कहता हमें फंड दे दो। अभी ये बात सुनो भाई, गैर जमहूरी हुकूमत, जाली हुकूमत, आखिरी में बोला हमें केपीके को फंड दे दो। तो गैर जमहूरी जाली हुकूमत से फंड क्यों मांग रहे हो भाई? क्यों मांग रहे हो? एक ही सांस में 2 बातें की कि गैर जमहूरी जाली हुकूमत है, केपीके को फंड दे दो। अकल की बात है ये कोई? जनाब हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं। हमने आपको कभी भी ये नहीं कहा, इस बेंचों से आपको याद होगा, इन दोस्तों को याद होगा कि इनकी हुकूमत में हर दूसरे दिन सिंध के लिए गवर्नर नाज का नारा लगता था। हर मेंबर खड़ा होता था, हम सिंध में गवर्नर राज लगाएंगे। हम आज भी कहते हैं कि वो बात भी गलत थी, और अगर आपके सूबे में कोई इस तरह की बात करता है तो वो बात भी गलत है। हम आज भी ये कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन क्या आपने अपनी इस गलती को इस स्टेज पर माना है कि हम ये गवर्नर राज की जो आपको धमकियां देते थे वो गैर जमहूरी था? हर आदमी रोजाना धमकियां देता था। हमने आज तक नहीं कहा। हम हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखते थे, रखते हैं और रखते रहेंगे, करेंगे। अब आपकी सियासत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी कादिर पटेल साहब, ऐसी कोई जी कादिर पटेल साहब, अभी खुर्शीद शाह साहब ने भी बोलना है। पटेल साहब एक मिनट, आप पहले सुन तो लेना। पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे खुर्शीद शाह साहब ने भी बोलना है और 7 बजे हमने ज्वाइन करना है। कादिर पटेल साहब का माइक खोलें। सर मैंने कभी भी ना ऐसी बात की है। आप तकरीर मेरी रिकॉर्ड पर है। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि कोई डांस कर रहा। मैंने कहा आप सारी रात डांस करें। मैंने किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं कहा। वो मुझे पता है कि कोई भी बहाना करके इन्होंने भागना है और इन्होंने सच बर्दाश्त नहीं होता ना, सच बर्दाश्त नहीं होता। मुझे पता है कि इन्होंने भागना है, कोई भी बहाना करना है, तो ये मुझे पता है। अब इनकी सियासत क्या रह गई है वो मुझसे आप सुन लें। इनका एक ही एजेंडा है कि इदारों पर हमले करो, मईशत पे हमले करो। जब भी आप देखें कोई मईशत की एक्टिविटी इस मुल्क में होती है तो इनकी हड़ताल की कार आ जाती है। ये चाहते हैं कि ये मुल्क दिवालिया हो, खुदा न खास्ता मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे, इदारों को नुकसान पहुंचे। और इनका मसला सिर्फ एक ही है कि इनको पता है कि लोग दिनों में इनको भूलते जा रहे हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप बिलावल भुट्टो चेयरमैन की सूरत में आगे बढ़ा रही है, उसकी लीडरशिप उसको लेके। अभी तो इसको बांध के आया था मैं, फिर खोल दिया। ये तो अभी बांध के आया था मैं। तो बहरहाल जनाब अली, अब कौम समझ चुकी। अच्छा, ये पहले कहते थे हम आएंगे 1 अरब उसके मुंह पे मारेंगे, 2 अरब उसके। वो कोई अरब मरब नहीं, बल्कि पता नहीं कितने अरब जेब में डाल के चले गए, IMF से कर्जे लेके चले गए। और ये अब किस बुनियाद पे सियासत कर रहे हैं कि हमें क्यों मौका दो। आपने सारे मौके गंवा दिए। आपने इदारों पर हमले कर लिए, मईशत पे हमले कर लिए, मुल्क को तबाही के दाने पे ले आए। आपने इदारों पे 9 मई जैसे वाकयात कर लिए जो इंडिया नहीं कर सका। अब आपके पास कोई जवाब नहीं सियासत का, कोई जवाब नहीं सियासत का। लिहाजा अब आप में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। अब आपके अंदर ही ऐसे लोग पैदा हो गए हैं कि जिनको पाकिस्तान अजीज है, पाकिस्तान की पार्लिमान अजीज है। लिहाजा जो अंदर है उसको अंदर रहने दो और जो बाहर है इस तरह बस ऊपर हाथ खड़े करके इसी तरह चलते रहो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कादिर पटेल साहब, अगर ये रात भर डांस का जो लफ्ज़ है वो अगर आपने कहा है, जो कि अगर आपने कहा है तो उसको हम एक्सपेंस करते हैं, डांस के लफ्ज़ को एक्सपेंस करते हैं। बस हो गया ना, बस अब हो। शाह साहब बोल रहे हैं। खुर्शीद अहमद शाह साहब का माइक खोलें। मिस्टर स्पीकर, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह ऑन पर्सनल एक्सप्लेनेशन। आप तशरीफ रखें, तशरीफ, नो क्रॉस टॉक प्लीज, तशरीफ रखें। मिस्टर स्पीकर, मसला यहाँ हल कर देते हैं, आप कर दे। कल के दिन में, परसों के दिन में जो माजी में होता रहा उसकी फिल्म चला दे, पता पड़ जाएगा। मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने
कहा कि हमने बड़ी मेहनत करके सवाल बनाते हैं और ये जो छपे जाते हैं खर्चा आता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, कम से कम इस कुर्सी पे बैठ के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर जारी था, शुरू किया हुआ था, और आते ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा किया, ये लड़ाई करा के चले गए। ये पैसा किसने ज़ाया किया, ये टाइम किसने ज़ाया किया इस हाउस का? और जो बातें हुई फिर वो बैठ के सुनी जाती, उनका जवाब सुना जाता, फिर एकदम चले जाना। इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो पाकिस्तान के अवाम के वोटों पे बनी है, 35 पंचर पे भी नहीं है। 35 पंचर की भी बात हुई थी। और बड़ा अफसोस उस वक्त होता है जब हम लोग सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जहां पे जाके पाँव में बैठे थे। मैं बड़े फख्र से आज पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से इस बेहूदगी को ख़त्म किया गया था। 2008 से 13 तक, 13 से 18 तक ये पार्लियामेंट नजर आती थी दुनिया में कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। पहली मर्तबा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बाइज़्ज़त तरीके से आया, बाइज़्ज़त तरीके से गया, बाइज़्ज़त तरीके से प्रेसिडेंट आया, और जिस तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से प्रेसिडेंट गया, तो हमने कोशिश की है आज भी। आपने देखा कि जब यहां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, कितने लोग इनके हमारे पास थे, आए थे कि हम आपके साथ हैं, हम बैठेंगे, मगर हमने वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्योरली पॉलिटिकली अपोजिशन के थ्रू किया, और आपने देखा वो कामयाब किया। पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से प्राइम मिनिस्टर गया है। दूसरी बात, एक और काम भी आप करें, ये भी रोज चलता है। जहां 2008 और 13 को तो छोड़ दे, उसमें तो ये नजदीक नहीं आएंगे। 8 और 13, 13 और 18, और 18 और 3.5 साल की प्रोसीडिंग निकाल लें। कितने क्वेश्चन नंबर यहाँ हुए, कितने कोरम पॉइंट आउट हुए, कितनी पार्लियामेंट चली, वो निकाल के कम से कम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को सामने रखा जाए कि कम से कम इनको एहसास हो कि हमें अंधेरे में पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है, ये बेहतरीन फोरम है। जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, खान साहब मेरे साथ होते थे, मैंने हमेशा इनको मौका दिया, और मुझे बड़ा फख्र है अपने किरदार पे कि ये नाराज होकर चले गए, मैं इनको वापस ले आया, और न सिर्फ वापस ले आया, स्पीकर सरदार अयाज से लड़ झगड़ के, हुकूमत से लड़ झगड़ के, अपने भाई आसिफ ख्वाजा को जो लड़ पड़ा था कि कुछ नहीं देना, उनको हाथ बांध के इनको पर्सन प्रिविलेज पूरे दिलवाए, और कहा कि पार्लियामेंट में बैठो, पार्लियामेंट में सियासत करो, जो लड़ाई करनी है करो, जो आज भी किया है फिर करो, मगर बैठो इधर, गलत बयानी से काम न लो। मैं झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि वो पार्लियामेंट्री नहीं है। गलत बयानी से काम मत लो, खुदारा बैठ के मसले का हल निकालो, और ये क्वेश्चन नंबर जो कुछ हम लेके आते हैं इस पर डिबेट करो। अपोजिशन गवर्नमेंट को कोशिश करे कि एक्टिव करे, गवर्नमेंट को एहसास हो कि हम नहीं जाएंगे तो फिर हम पे हमला होगा, और हाउस भरा रहता है। और ये वाकई सच कहते हैं कि बड़ी मेहनत करते हैं मेंबर साहबान, बहुत मेहनत करते हैं, मगर दुख ये होता है कि उसकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। आज कम से कम का दिन तो बच जाता। ये मेरी गुजारिश थी। बाकी ये जितना शोर करे वो कर ले, ये इनका राइट है, इनको मना नहीं किया जाए। मेहरबानी। The House is adjourned to meet again on Tuesday, the 29th October 2024 at 11 a.m.
Hey guys, welcome to this session by Intellipath. So we live in an era where data is our most important asset and it is being used at the heart of every decision making process. And that's why it becomes very important for us to learn SQL so that we can mine data very easily and also with greater efficiency. So keeping this in mind, we have come up with an end-to-end SQL developer course so that you can learn all the major concepts of SQL. And before we go ahead and start a session, do subscribe to our channel and like and share our video so that we can create more such informative content. Right, so let's have a quick glance at the agenda. We'll start off by understanding what exactly is a database and learn how to create and use a database. After that, we'll learn how to create a table and then learn how to extract data from it with various clauses and operators. Going ahead, we'll learn how to join different tables using different join statements, following which we'll work with different inbuilt functions and user-defined functions. After that, we'll work with stored procedures and transactions in SQL, and finally, we'll learn how to implement exception handling. So what exactly is a database? Well, simply put, it's just an organized collection of data that is stored in an electronic format. More specifically, a database is an electronic system that allows us to easily access, manipulate, and update the data. Now, the modern databases are managed using something known as a database management system. So, a database management system, or DBMS, is basically a system software for creating and managing databases. So, the DBMS provides users and programmers with a systematic way to create, retrieve, update, and manage data. So now that we've understood what exactly is a database and database management system, let's have a look at the types of database architecture. So the database architecture could either be file server or client server. So let's start with the file server architecture. So in the file server architecture, the files are located on your local system. That is, they are local to you. Now, suppose you have an Excel file with you and you send a copy to your friend. Now, if you make any changes in your original Excel file, those changes would not be reflected in the file with your friend. So in the file server architecture, the server or the local system acts only as a storage device and only one person at a time can access it. So this is the basic premise behind file server architecture. Now let's look at client server architecture. So we can see that there are three OLEDB components, or in other words, they are just client systems or the user systems. So we have just shown three over here, but there can actually be n number of systems accessing the database at the same time. So let's say you're logged into the IRCTC website and want to know the number of trains running from one place to another place. So you'll send a request from this system to the network server. Now this network server sends the same request to the database server, and this is finally forwarded to the database. And then the final result is sent back to the user system. So similarly, if there are three users sending the same request, the database server will process all the three requests simultaneously and send back the result to all the three systems. So that was about the types of database architecture. Now let's finally understand what exactly is SQL. So SQL basically stands for Structured Query Language, and it is the standard language for accessing and manipulating databases. Or in simple terms, SQL helps you to communicate with a database. Now the SQL commands can be divided into four categories: data query language, data definition language, data manipulation language, and data control language. So the data query language comprises of just one command, select, though it can be accompanied with many clauses to compose queries against a database. And DDL is that part of SQL that allows a user to create and restructure database objects. So you can see commands like create table, alt table, and drop table in DDL. After that, we have data manipulation language, which is used to manipulate the data within tables. So the three basic DML commands are insert, update, and delete. And finally, we have data control commands, which allow us to control access to data within the database. So these DCL commands are normally used to create objects related to user access and also control the distribution of privileges among users. And you can see commands like grant and revoke in DCL. We'll be installing Microsoft SQL Server.
So all you have to do is go to Google and then type Microsoft SQL Server download, and you'll get these search results. Now out of these search results, click this one where you see SQL Server downloads from the Microsoft site. So we are into the site now. If I scroll down, we see two free editions. We have the Developer Edition and the Express Edition. So I'd be downloading the Developer Edition. I'll click on download and the download would start. Now this is the downloaded file over here. SQL Server 2017 SSEI development. So we get this window over here and we have three options: basic, custom and download media. So I'll click on custom. Now we see that we have a media location where the SQL Server will be downloaded, and I'll click on install. So see that the download is successful and our installation will begin shortly. Here I'll click on installation and I'll select this one. So I'll be installing a standalone installation of the SQL Server. So let us wait for this to open. Right, so over here I click on next. Now I already have one instance of SQL Server, so I'll be installing a new one. So I'll select this perform a new installation of SQL Server 2017. And then I'll select this free edition. I'll click on next. After that, I'll accept this license agreement and again I'll click on next. So we have all of these features over here. So I would just need the database engine services. So I'll select this and again I'll click on next. So I'd have to name the instance for the server which I'm installing. So I'll name this server as, let's say, Sparta. Similarly, I'll give the same instance ID over here. I'll click on next. So again, I'll click on next over here. So we see that we have two authentication modes, Windows authentication mode and mixed mode. I'll select the mixed mode and then enter the desired password. Let me put in my password over here. I'll add the current user. So the current user has been added. Now I'll click on next again. Right, so we are finally ready to install SQL Server. I'll click on install. Right, so once the installation is done, I would also have to install the SQL Server management tools. So these SQL Server management tools basically help us to connect with the database. I'll click on this. And this will redirect us to the Microsoft web page. And over here, I'd have to download the SQL Server Management Studio, and I'll be downloading the latest version. And this is the downloaded file over here, SSMS setup ENU. I'll click on this. So over here we have these three options: repair, uninstall and close. Now I have these three options because I've already installed Microsoft SQL Server Management Studio in my system. And if you're installing this for the first time, you'll have the install button over here. So you'd have to click on install and the install would be done automatically. Right, so once you install the SQL Server Management tools, go to the search tool and type Microsoft SQL Server Management Studio. Click on this and Microsoft SQL Server Management Studio will start. So over here you would have to specify the password which you gave while creating the instance and then click on connect. And to start writing your SQL commands, click on new query over here. And then you can happily implement all of your SQL commands. Right, so this was the installation of Microsoft SQL Server. Tables in SQL. So simply put, a table is a database object which comprises of rows and columns. And in SQL, the rows are known as records and the columns are known as fields. So the fields are basically columns which provide specific information about data in the table. For example, we have this e-salary field in the table which provides information about the salary of different employees. Similarly, we have this e-age field which provides information about the age of different employees. And a record is basically each individual entry that exists in the table.
So record gives you complete information of one single entity. For example, if we take this record over here, this would give us complete information of this particular employee. So this was all about tables. How to create, use and drop a database. So this is the syntax to create a database in SQL. We will give in the keywords create database and then give the name of the database which you want to create. So let's go ahead and create a database in SQL. So let's create a first database, guys. So I will give in the keywords create database and let's say I want to name the database as happy, right? So I'll put a semicolon over here. I'll hit execute. So see that commands have been completed successfully. Now let me hit refresh over here. So initially we just had two databases, Igneous and Sparta. After implementing this command create database happy, we have successfully created a new database happy. Now after we have created a database, we need to know how to select a database from our existing list of databases. So we have the use database statement for this. All we have to do is give the keyword use and then state the name of the database. Now this database which you selected remains default until the end of a session or execution of another use statement with some other database. So if I put my mouse pointer over here, so you see that currently we are using the Sparta database. So now I want to use the happy database instead of the Sparta database. So I will write the command for that use and then after that I need to give in the database which would be happy. I'll put a semicolon, I'll hit execute. So again commands have been completed successfully. So now we see that the database has changed from Sparta to happy. So currently we are inside the happy database. Now we'll see how to delete a database or in other words how to drop a database. So we have to give in the keywords drop database and then specify the name of the database which you want to drop. So now I'd want to drop this Igneous database. So let me write the command for that. Drop database and then the name of the database is Igneous. So I'll put a semicolon over here. I'll hit execute. So again commands have been completed successfully. Now I'll hit refresh. So we have only two databases, Happy and Sparta. So the database Igneous has been dropped. Data types in SQL. So a data type basically defines the kind of data that will go into a particular column. Now it needs to be kept in mind that all the entries of one particular column would have the same data type. So let's take this e-salary column for example. We see that the first entry is of integer type. The second entry is also of integer type. Similarly, all the entries of this e-salary column are of integer type. Now let's take this department column. Here we see that all the entries of this particular column are of character type. Now that we've understood what exactly are data types, let's have a look at the different data types available in SQL. Let's start with the numerical data types. So we have the big int data type which helps us to store really big values. So you can see the range of big int over here.